Hi guys, this is the 35th episode of People's Podcast Pakistan. हमने अभी तक प्लेटो रिव्यू किया है। प्लेटो के हमने मेजर डायलॉग्स पढ़े हैं। अब हम प्लेटो के स्टूडेंट जो अरिस्टोटल था, विल टॉक अबाउट हिज मेजर वर्क्स स्टार्टिंग विद द निकोमेकियन एथिक्स। निकोमेकियन एथिक्स इसलिए क्योंकि वी बिलीव कि निकोमेकियन एथिक्स इज अ बिट सिंपलर टू अंडरस्टैंड। इतनी इतनी मेटाफिजिक्स से अगर उसको कंपेयर करें तो इट्स ईजियर टू कॉम्प्रिहेंड। किताब की तरफ हम विल कम टू लेटर, बट फॉर नाउ एरिस्टोटल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एज वी ऑल नो ही वाज अ फेमस स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। पैदा हुआ वो अराउंड 320 बीसी, और ही वाज, आप कह सकते हो, अ वेरी पॉपुलर स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, जिसने जिसने ना सिर्फ उसके काफ़ी व्यूज़ अपहोल्ड किए, बट उसकी काफ़ी फेमस क्रिटिसिजम्स भी उसने पेश की। जिस तरह थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की काफ़ी हमें फेमस क्रिटिसिज्म मिलती है, जो वो निकोमेकियन एथिक्स के अंदर भी डिस्कस करता है अबाउट द फॉर्म ऑफ द गुड, और जब वो वर्च्यू की बात करता है स्पेशली बुक वन में, जिसके बारे में हम आज वीडियो बना रहे हैं। ही टॉक्स अबाउट हिज क्रिटिक ऑफ हिज टीचर्स प्लेटोज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। तो जो किताब है निकोमेकियन एथिक्स, ये बेसिकली डील करती है अबाउट हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, हाउ टू अटेन वर्च्यू। सोक्रेटिक डायलॉग्स इन द वर्क्स ऑफ प्लेटो, वो भी आपको काफ़ी सरफेस लेवल फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस से आगाह करते हैं आपको। फॉर एग्जांपल, वर्च्यू क्या होती है, ट्रुथ क्या होती है, क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, प्रिसाइजली व्हाट वाज डिस्कस्ड इन द रिपब्लिक, along with many other concepts जो एरिस्टोटल कंटिन्यू करता है अपनी किताबों के अंदर। निकोमेकियन एथिक्स जो है ना, इसका नाम आप कह सकते हो पड़ा है बिकॉज इट वाज डेडिकेटेड प्रोबेबली टू एरिस्टोटल्स सन, जिसका नाम निकोमेकस था, लेकिन इट कुड हैव आल्सो बीन डेडिकेटेड टू हिज फादर, क्योंकि उसके उसके फादर का नाम भी निकोमेकस था। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो किताब है, जो 10 डिफरेंट स्क्रोल्स थे, जिनको एक एक कंबाइन करके एक एडिशन बना दिया गया। कुछ लोग कहते हैं इट वाज एडिटेड बाय एरिस्टोटल सन निकोमेकस, इसलिए इसको कहते हैं निकोमेकियन एथिक्स। सम पीपल से इट वाज डेडिकेटेड टू हिज सन और हिज फादर, बट आई गेस विल नेवर नो द ट्रुथ। बट ये जो किताब है, ये काफ़ी, इसकी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इट 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 काफ़ी फेमस हुआ ये काम, और इसने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया स्पेशली क्रिश्चियन थियोलॉजी को, और उनकी मॉरल्स को, उनकी मोरालिटी को, उनके वर्च्यूज़ को। और जो कॉन्सेप्ट्स बताए हैं अरिस्टोटल ने, सच एज इस कॉन्सेप्ट ऑफ यूडेमोनिया, व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज वर्च्यू, व्हाट इज गुड, अपोज टू प्लेटोज वर्जन ऑफ द गुड, हिज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। ये जो सारे कॉन्सेप्शंस हैं, डिफरेंट फिलोसफीज हैं, मैनी ऑफ देम वर, आप कह सकते हो, they inspired Christian theology in the medieval ages। और जो अरिस्टोटल की जो एकेडमी थी लाइसियम, जहाँ पे ये 10 स्क्रोल्स थे, और 10 स्क्रोल्स को लिखा गया, उसके लेक्चर्स जब अरिस्टोटल दे रहा होता था, तो स्टूडेंट्स यूज्ड टू राइट देम डाउन इन डिफरेंट स्क्रोल्स। हर लेक्चर डिफरेंट, यू कैन से ये 10 डिफरेंट लेक्चर्स हैं। ये जो 10 किताबें हैं निकोमेकियन एथिक्स में, जो इसकी एकेडमी लाइसियम में इसके स्टूडेंट्स ने लिखी थी, कंपाइल बाद में हुई। तो जो एकेडमी है लाइसियम, ये आज भी it expanded to several branches in Europe, और काफ़ी वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस हुई इस एकेडमी इटसेल्फ की, बिकॉज एरिस्टोटल ने यहाँ पे पढ़ाया और उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस था, और इस एकेडमी ने काफ़ी ब्रिलियंट फिलोसफर्स, काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स प्रोड्यूस किए। एरिस्टोटल जो है ना, आप कह सकते हो कि एक डिस्टिंक्शन है बिटवीन एरिस्टोटल एंड प्लेटो, इन द सेंस कि एरिस्टोटल का जो काम है, इट्स काइंड ऑफ मोर प्रैक्टिकल। एरिस्टोटल खुद भी अपनी किताब के अंदर कहता है कि we've done enough with the platonic usage of these terms such as virtue, justice, truth. Yeah, we all know कि in abstract theories these things are different, but when you apply these things to uh, the common good of humans, and how we can apply these things, apply justice, apply truth, become more virtuous, अपनी अपनी जिंदगियां और सबकी जिंदगियां बेहतर करें, तो दैट्स अ टोटली डिफरेंट डोमेन। वो उसको कहता है कि दिस इज प्रैक्टिकल फिलोसफी अपोज टू, आप कह सकते हो, थियोरेटिकल फिलोसफी, जो आप कह सकते हो सोक्रेटिक डायलॉग से, प्लेटोनिक डायलॉग से।
तो अरिस्टोटल जो अपनी किताब है निकोमेकियन एथिक्स, वो भी सेंटर इसी इसी लिटिल कनंड्रम के इर्द गिर्द करता है कि how how do we come to know what justice is, sorry, what virtue is? How do we come to know what a good life is? How do we come to know what a good man is? And how do we apply these things to become better people and to live better lives and to make lives easier for all the other people? पॉलिटिक्स एक और किताब है एरिस्टोटल की। पॉलिटिक्स इससे कंपेयर काफ़ी आप कुछ हद तक कर सकते हो इन द सेंस कि निकोमेकियन एथिक्स में जो ये कंसेप्शंस देता है ऑफ एथिक्स इटसेल्फ, ऑफ वर्च्यू, ऑफ ट्रुथ, यही ऑन अ लार्जर स्केल दीज थिंग्स मैनिफेस्ट देमसेल्व्स ऑन अ लार्जर स्केल इन पॉलिटिक्स। क्योंकि इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, यू कैन नॉट मेक पॉलिसीज which you think are good or bad for you or for the common good. तो ये कामों मतलब ये दो किताबें जो है निकोमेकियन एथिक्स और पॉलिटिक्स, आपको इसमें काफ़ी ओवरलैपिंग एलिमेंट्स नज़र आएंगे। और लास्टली एक और किताब है एरिस्टोटल की, यूडेमियन एथिक्स के नाम से। यूडेमियन एथिक्स की भी काफ़ी बुक्स हैं, बुक 3, बुक 4 और बुक 5। ये आपको इनके अंदर काफ़ी ओवरलैपिंग एलिमेंट्स हैं विद निकोमेकियन एथिक्स। सम पीपल बिलीव्ड कि ये काफ़ी लंबे लेक्चर्स, लाइक 15, 17, 18 लेक्चर्स थे लाइसियम पे। लाइसियम में जो एरिस्टोटल ने दिए उसके स्टूडेंट्स ने स्क्रॉल्स पे लिखे और दीज वर सपोज्ड टू बी कंपाइल्ड इनटू अ सिंगल वर्क। लेकिन सम ऑफ द स्क्रॉल्स वर नेवर फाउंड। तो जो स्क्रॉल्स रह गए उनके बीच में स्टूडेंट्स ने डिस्टिंक्शन की एंड दे डिवाइडेड इट इनटू entirely two different books, the Eudemian ethics and the Nicomachean ethics, जबकि it wasn't intended for them to be separate books. They were just scrolls, और जो missing scrolls थे उनको निकाल के they just divided the books in the scrolls into two parts, the Nicomachean and the Eudemian. This was a short overview या introduction to the Nicomachean ethics. The book is right here, काफी मोटी किताब है। It has around 300 pages. It's not even that huge, but for someone who's new to Aristotle, uh, after reading the works of Plato, it would be a bit harder to comprehend. अगर आप एरिस्टोटल पढ़ते हो राइट आफ्टर रीडिंग प्लेटो, मुझे काफ़ी टाइम लगा निकोमेकियन एथिक्स पढ़ने में, इवन दो नाउ आई थिंक it's not even that hard to comprehend. But yeah, for the first time readers, the people who are just reading it, क्योंकि इसमें एक चैप्टर है आर फ्रेंड्स नेसेसरी फॉर हैप्पीनेस, आई थिंक सो इट्स नॉट श्योर बुक 5 या 6 में आता है। उसमें मैं इंटरेस्टेड था, आई सॉ वीडियो ऑन इट और मैंने कहा अच्छा लेट्स गो थ्रू व्हाट एरिस्टोटल हैज टू से अबाउट इट। मैंने फिर ये किताब ली, इट्स लाइक 2 years ago, no, a year and a half ago, and I read it. I wasn't able to comprehend a lot of it, but फिर मैंने शुरू से शुरू किया, प्लेटो पढ़ा मैंने स्टोइक्स को पढ़ा, प्री सोक्रेटिस को पढ़ा, फिर मैं एरिस्टोटल पे आया तो इट वाज अ बिट ईजियर फॉर मी टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट इज ट्राइंग टू से, क्योंकि रेफरेंसेस भी वो काफ़ी देता है बार बार अपनी किताब में, स्पेशली इन बुक 3 एंड द बुक्स दैट फॉलो इट। प्लेटो के कुछ थ्योरीज को वो सामने रखता है एंड देन ही कंपेयर्स हिज ओन आइडियोलॉजीज विद दोज ऑफ प्लेटो। सो yeah, I guess it's enough with introduction. So we're gonna start with book 1. Obviously it's the first book in Nicomachean Ethics. So Waleed, would you want to start, या फिर I give my own kind of overview of the book? Yes, अभी हम इस बुक में मेरे ख्याल में अराउंड 10-11 मेजर पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज बुक 1 में, और दीज आर मेजरली concerned towards describing what happiness is. एक तो और वो हैप्पीनेस ओवर गुडनेस इज। अगर हमने पहले प्लेटो को पढ़ा था, प्लेटो टोल्ड अस कि जो गुडनेस है, गुडनेस एग्जिस्ट इन द अल्टीमेट गुडनेस और सुप्रीम गुडनेस, it exists in the realm of ideas, in the world of ideas. But Aristotle says over here is that the ultimate good could be something, or should be something that we should be able to get in this material world as well, or we should be able to find the ultimate and ultimate good in this world. और दिलाई बात तो हम इंट्रोडक्शन में भूल ही गए यार कि ही वाज स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, और इसका जो बाप था निकोमस, he was he was a tutor of Alexander. Sorry, that's what I wanted to say.
या। Yeah, or yes, we could also describe कुछ stories भी हैं that I would that we could research after we finish our podcast. बड़ी मज़े मज़े की स्टोरीज भी हैं अलेक्जेंडर और उसकी, आई डोंट नो दोज आर ट्रू, कुछ लोगों ने कुछ बनाए भी हैं मगर yes, yes, he had influence on personality of Alexander, or he had very good ties with with the with the kings of Macedonia. इसका जो बाप था, he was a courtsman, he was a physician in court of Philip of Macedonia, and then later on from there he became the tutor of Alexander, and after teaching Alexander he came back to Athens, made his own institute, the institute you told about, um, which has now branches throughout Europe. And I was just यहाँ पे searching भी it. It नाम है has काफ़ी, अमेरिकन लाइसियम वगैरह, मेरे घर के पास भी एक है ब्रांच, तो इट हैज़ द सेम नेम फ्रॉम दैट लाइसियम जो 2200 साल पहले था। वो तो पाकिस्तान में ऑक्सफोर्ड स्कूल भी है, ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड कॉलेज भी है मगर हम यहाँ तो लोग सब कुछ टापू बैठे हैं ना यार, हमारे हमारे यहाँ सारे टापू बैठे कॉपीराइट कॉपीराइट्स नहीं है हमारे यहाँ, वरना पूरा आधा हैं। पाकिस्तान बंद हो जाए वही ना। तो खैर हाँ बिल्कुल ऐसे ही मैं देखा था, बल्कि वो जो लाइसियम की जो इंस्टीट्यूट है वो फिलीपींस में भी है, कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी मैं सर्च करा था है। सो यस, it's very broadly spread now, considering कि ये 2000 आज से तकरीबन 2200 दो साल तकरीबन। 2200 साल 2200 साल पहले या 2200 2300 साल पहले इस तरह की इंस्टीट्यूट थी, और इट्स स्टिल कैरिंग ऑन इट्स नेम। खैर वी विल जस्ट कम टूवर्ड्स अवर बुक वन। सो बुक वन का जो पहला मेजर टॉपिक, इट सेज कि इट्स it's about finding good, as I already told, the ultimate good, जिस तरह प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में बताया कि गुड अल्टीमेट गुड एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, ठीक है, जहाँ हर चीज़ का एक सांचा है, और उस सांचे की कॉपी जो है हमारे इस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में है। तो प्लेयर basically Aristotle says no, good can be something that we can perceive in our existing world, in our material world. So what he says in contrast to this, so Aristotle says over here that every activity, every investigation, or every kind of, you can say, action or pursuit is aiming towards good. बेसिकली हर इंसान का जो हर इन्वेस्टिगेशन है, हर इंसान की मेहनत है, चाहे वो हर चीज़ जो है, इट इज़ उसका एक पर्पस गुड है। अब अब ज़रूरी नहीं कि वो अल्टीमेट गुड हो, और जो गुड जो अब वो अचीव करना चाह रहा है, इट कुड बी अ स्मॉल इंटरमीडिएट स्टेप टुवर्ड्स द अल्टीमेट गुड दैट वी वांट टू अचीव। एंड इसका जो मतलब कि पार्ट वन में नहीं बताया कि हमारा जो मेन पर्पस है, इट इज़ द पर्पस टू फाइंड दैट अल्टीमेट सुप्रीम गुड eventually. So yes, as you already told, these are in form of concise lecture notes that his students made. So yes, we are gonna explain them as much as possible, Abdullah. So yes, so over here he starts discussing about the good of the society. In the good of the society, we come across the good of politics. We discuss the science of politics. Over here, while discussing the science of politics, Aristotle says ये कहता है कि जो politics की जो science है, it's not an exact science. It's not an exact science of pursuit of good, because good can be good जो है, it's not only कि हम जो है good को pursuit कर सकते हैं through political science. No, it can also be achieved through different sources of exact science. जैसे कि exact science में आप कह सकते हो biological science. इसका इसका जो exact good है, exact good would be to heal, to treat human beings, or to treat fellow humans, which is a form of good as well, which is an intermediate good, which then goes towards that ultimate good. But the political science is not an exact science, but it consists of that intermediate goods throughout different human sciences. और दैट इज़ वाइल पॉलिटिकल साइंस की हमारे जो आपके लोग आज के दौर में इसलिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, बिकॉज creates a it maybe creates a kind of creates different rules and harmony between us to follow and achieve some intermediate goods, and then towards that ultimate good.
सो पॉलिटिकल साइंस एक तरह का अभी भी कह सकते हो कि जो ह्यूमन का जो इंसानों को रहता है जो एक कॉन्ट्रैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है, इट कम्स इन शेप थ्रू पॉलिटिकल साइंस. व्हाट डू यू थिंक, अब्दुल्ला? Comes in the shape of political science. Yeah, you could say that. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बेसिकली रूसो की जो थ्योरी थी, जीन जैक रूसो की थ्योरी, इट वाज बेसिकली कि जब सैवेज मैन स्लोली इवॉल्व टू बिकम सिविल मैन, तो उसने देखा कि हमारा ज़्यादा फ़ायदा है कि हम लोग सोसाइटीज़ में रहें एज सिविलाइज्ड पीपल, तो वी हैव टू गिव सम ऑफ आवर लिबर्टीज़ इन द सेंस कि हम लोग किसी को भी कभी भी जो हमारी मूड्स एंड विम्स की वजह से रेप नहीं कर सकते, मर्डर नहीं कर सकते. We need to live as civilized people and we need to sign this social contract कि ना तुम मुझे हर्ट करोगे ना मैं तुम्हें हर्ट करूंगा. तो in that sense that's the essence of the social contract theory कि you will come to live in a society by becoming civil. तो yeah, you could say कि it manifests itself in political science. You could see politics through that lens as well. Yeah, you could say that to some extent. पॉलिटिकल साइंस इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस मेक्स इट क्लियर कि हमने अगर गुड परस्यू करना है in different areas throughout society, so how we are going to pursue that good, or how we are going to pursue the end of certain activities. For Hmm. example, अगर हमने हमारी जो एक्टिविटी it's the activity of a carpenter. एंड कारपेंटर की जो एक्टिविटी है, इट्स उसका जो एंड है वो ये है कि ही हैज़ टू बिल्ड एन टेबल ही हैज़ टू बिल्ड ए टेबल, और he has to build a chair. So political science, you could say that political science in terms of that carpenter would be कि how he has to get the wood for his activity. He has to get that wood through commerce. Then commerce की अंदर political science आती है. Then there would be some rules of commerce कि किस तरह trading carry out होगी. Then carpenter ने जब अपना ultimate goal achieve कर लिया, then after ultimate goal के अलावा मतलब कि how we achieve those ultimate goals in certain activities, or we have to keep those goals moral, or those activities moral. तो that is why शायद हम ये कह सकते हैं कि जो political science है, it could be political science इसलिए भी ज़रूरी है because it's an secondary term for social contract. या फिर what do you think? Is that possible, Abdullah? हाँ, क्योंकि we when we come to live in a society as civilized people, as civil man, opposed to savage man, तो we have our individual good which हमारे लिए क्या अच्छा है, and the common good what that which is good for this society itself or for the general people. तो एक हमारी इंडिविजुअल विल है, एक जनरल विल है. तो वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज और वी हैव टू मीट हाफ वे. तो ये जो कॉम्प्रोमाइज की जो एसेंस है ना, इसकी इसकी स्टडी को आप कह सकते हो पॉलिटिकल साइंस. इट डील्स विद सम ऑफ दैट. इट टेल्स यू के व्हाट थिंग्स यू आर अलाउड टू डू एंड व्हाट थिंग्स यू आर नॉट अलाउड टू डू, and to what extent do you have to give up your liberties and what rewards are you paid for giving up those liberties. So ये सारी virtue की science है political science. How to conduct yourselves in a society and how to compose yourselves as individuals as something greater than yourselves as the general will, and how to make laws which serves the general will and all of that. तो सारा गवर्नेंस का सिस्टम आ जाएगा. बट आई थिंक सो ये राइट. बिल्कुल वही जैसे कि वही हमने सेकंड पॉइंट भी इसमें इसी में कवर कर लिया कि yes, political science has that kind of authoritativeness in authoritative nature है political science की, because it governs what what should be taught throughout the state, and how everything should be dealt throughout the state morally. uh, so it can be beneficial for individuals and for the community as well. अगर वही ना तो बिल्कुल हमारा इसमें सेकंड पॉइंट में कवर हो गया अब्दुल्ला कि दैट द पॉलिटिकल साइंस दैट इज इज द साइंस दैट स्टडीज द सुप्रीम गुड फॉर मैन. ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस हम इसी में कवर कर लिया है, बट वही हाँ, थर्ड लेकिन पॉइंट अब्दुल्ला. when another thing Aristotle himself adds is कि अगर आपको नहीं पता ना कि वर्च्यू क्या है, अगर आपको नहीं पता सच क्या है, झूठ क्या है, ट्रुथ क्या है, जस्टिस क्या है, तो आप नहीं समझ सकते कि
इनकी एप्लीकेशन क्या होगी। फॉर एग्जांपल एथिक्स में वो बताते हैं निकोमेकियन एथिक्स में कि ये वर्च्यू क्या होता है, व्हाट इज द गुड। और पॉलिटिक्स के अंदर वो उसको थोड़ा एक्सपैंड करता है और उसको लेके जाता है कि हाउ कैन यू अप्लाई दीज टर्म्स। तो पॉलिटिक्स में वही चीज़ मैनिफेस्ट होती है जो बड़ी एक सबॉर्डिनेट लेवल की होती है। फॉर एग्जांपल व्हाट इज गुड, अगर आपको नहीं पता व्हाट इज गुड, तो विल नॉट बी एबल टू मेक लॉज which you think are good for the general will. So you can only apply that in political science after you know what virtue is, after you know what good is. तो या इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन जिस तरह मैं भी अभी मेटाफिजिकल फिलोसफी पढ़ रहा हूँ और एपिस्टेमोलॉजिकल पे कुछ हद तक पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं पॉलिटिकल फिलोसफी की तरफ जाऊंगा, विच इज़ आई थिंक सो अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स। क्योंकि इफ़ यू डू नॉट नो दी सरफेस लेवल ऑफ इट कि सच्चाई है क्या, गुड है क्या, यू कांट डेल्व डीपर इनटू पॉलिटिकल फिलोसफी। बट या आई जस्ट वांट टू ऐड दैट, कंटिन्यू कर सकता है अनुमान। That's fine, no worries. We third point, Abdullah, that we already discussed. Politics is not the exact. It's not an exact science. Politics can govern sciences, but it's not exact in every nature of science. इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि अब पॉलिटिकल साइंस में हम ये और गवर्न कर सकते हैं कि व्हाट विच सब्जेक्ट्स कुड बी टॉट इन ए स्टेट। अब मगर इट्स नॉट एन एग्जैक्ट साइंस कि हम उसमें चले जाएँ कि वो साइंस कौन सी होगी, साइंस के अंदर कौन सी ब्रांचेज़ होंगी, फिर उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, उसका सिलेबस क्या होगा। नो, it just overlooks all those kinds of sciences, and but it's not an exact science in its own term. But yes, but it has that authoritative sense. So we क्योंकि कोई so डिटरमिन्ड आंसर्स नहीं है ना, hmm, क्योंकि आपको फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी या फिर फॉर एग्जांपल मेडिसिन आपको बताती है कि यार ये डिजीज है, इसकी क्या हो गया मुझे, आई फॉरगॉट द वर्ड फॉर इट। अच्छा खैर, ये मेडिसिन है और आपको डिटर्मिनेशन के साथ पता है, सर्टेनिटी के साथ कि अच्छा ये चीज़ है, ये बीमारी है, ये इसकी इसकी कॉजेज एंड ऑल ऑफ दिस। बट पॉलिटिकल साइंस ऑन द अदर हैंड, इट डील्स विद समथिंग वेरी एब्स्ट्रैक्ट इन द सेंस के द गुड इट माइट डिफर फॉर पीपल। ये एक रास्ता नहीं है सबके लिए कि अच्छा इफ द गुड इज हैप्पीनेस तो एवरीवन शुड परस्यू हैप्पीनेस, या फिर इफ द गुड इज ऑनर तो everyone should pursue honor. There's not one single path, so it deals with all of these things in a very abstract sense. So easily it is not an exact science क्योंकि there's no one answer to this. बिल्कुल। और उसी के बाद आके एरिस्टोटल आगे बात करता है कि स्टूडेंट्स शुड हैव सम काइंड ऑफ जनरल नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ बिफोर स्टडिंग political sciences, because as you already told, गुड का जो परसेप्शन है, गुड इज बेसिकली गुड इज हैप्पीनेस। सो हैप्पीनेस का परसेप्शन जो है वो हर इंसान के लिए अलग है। एक मैथमेटिशियन का जो परसेप्शन होगा हैप्पीनेस का, वो अलग होगा एज कम्पेयर टू ए डॉक्टर। डॉक्टर का अलग होगा एज कम्पेयर टू ए ब्यूरोक्रेट। तो हैप्पीनेस differs in the society, and or it's not you can say common in terms of human or the occupation. So basically he is trying to say that कि अगर students want to learn political science, they should have some kind of general knowledge and experience of life, because अगर उनके अंदर experience नहीं होगा and they don't have that general knowledge, they would perceive social science, or they would perceive things in their own small world of the last, like if over here Aristotle basically says कि अगर कोई student जो है वो he's young, he has no experience of life, he would tend to follow his feelings, and he would not look at the general good, or he would not be able to perceive the general good because he's following his feelings instead of his experience. So in order to study political science, you should have some experience or some general knowledge prior to starting your search for good. Do you want to add anything over here, Abdullah? यार हाँ, adding on to your point, it's like हम सब के लिए वी कुड से कि हमारे जो एक्शंस हैं डिफरेंट, उनके डिफरेंट एंड्स होते हैं। कुछ होते हैं एंड्स इन देमसेल्व्स, कुछ होते हैं एंड्स टू हायर एंड्स, बट all of our actions have ends to some extent. और some could say कि यार हमारा जो greatest end है
वो हैप्पीनेस है हमारा जो सुप्रीम गुड है फॉर एवरी वन ऑफ अस, or for most of us, in for that matter, it's happiness. But it's like happiness के साथ एक एक ये नेगेटिव connotation है कि it is connected to sensual pleasure या फिर pleasures of sense perceptions कि आप it's connected to that idea of dopamine कि you're just injecting yourself with dopamine and you call that happiness. You call एक पॉजिटिव लेवल है, एक न्यूट्रल लेवल है, एक नेगेटिव लेवल है. नेगेटिव लेवल पेन है, पॉजिटिव लेवल हैप्पीनेस है, एंड we are not going to name the neutral one just yet. So people think that the positive level, which is pleasure, people think that that is happiness, but we have to get their definitions right first. But sensual pleasure or pleasures of sense perceptions, जानवरों के लिए तो चलो आप कह सकते हो कि that might be their supreme goal. We're not talking about subordinate ends. Yeah, we want to be happy. We want to be happy, but what about people like Viktor Frankl, जिसने किताब लिखी थी Man Search for Meaning, or many people who suffer in their lives and they find meaning through that, और उनको they don't care about happiness, right? They're suffering and they're still content. They do not care about happiness if their suffering has some deeper meaning which sustains them through it. So if we see that in that light, so Aristotle says that happiness could be a subordinate end or it could be a byproduct of your actions, लेकिन आपको जो supreme goal है ना, it could not be happiness itself. Then he says कि honors या फिर नाम या फिर fame आपको लोग admire करें और आपका नाम हो society में, लोग आपके बारे में किताबें लिखें, आप history में नाम छपे आपका, and all of that, people want that. एरिस्टोटल कहता है कि दिस कुड नॉट बी द सुप्रीम गुड एज वेल, क्योंकि ऑनर्स आपको दिए जाते हैं, दे आर बेसिकली कन्फर्ड एज अ रिकग्निशन ऑफ योर गुडनेस, कि आपने कुछ गुड किया, आपने कुछ अच्छा किया, इसलिए वी रिवॉर्ड यू विद दिस ऑनर, या फिर वी राइट योर नेम डाउन इन हिस्ट्री बुक्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो इट इज कन्फर्ड एज अ रिवॉर्ड और एज अ रिकग्निशन ऑफ गुडनेस. सो इट कैन नॉट बी द सुप्रीम गुड इट सेल्फ, एरिस्टोटल सेज. प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को वो बीच में लाता है. वो कहता है कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स बात करती है कि एक सिंगल फॉर्म ऑफ गुड है, और वो कहता है कि हर चीज़ जो गुड है, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ ब्यूटीफुल सनसेट, द ब्यूटी of the beautiful sunset participates in an eternal idea of beauty, the form of beauty. And in that same way, the beauty of a beautiful woman, it also participates in the very same way in that eternal idea of beauty or the form of beauty. And in the same way, all good things are good in the same way. लेकिन एरिस्टोटल की critique ये है, वो कहता है कि things are so complex and they're so complicatedly good and beautiful कि आप उनको categorize नहीं कर सकते, एक डब्बे में नहीं आप उनको डाल सकते कि अच्छा all of these things are good. There is a virtuous man, बड़ी weak से term है, there is a just man, there is an honorable man, there is a truthful man, and there is a trustworthy man. All of these four men are have attained a similar level of goodness, और इनके अंदर सबके अंदर एक ही intensity of good है. So that is very good, and that is, you could say, inaccurate to say. तो एरिस्टोटल की क्रिटिक है अबाउट द प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स. ही सेज कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये आइडिया ऑफ गुड के all people desire the same goal, और all people desire the same good, और there's one single form of good जो हम सबके ideas of good को influence कर रहा है. तो एरिस्टोटल फिर ऑन द फ्लिप साइड कहता है कि what if happiness is the highest good, क्योंकि it could be chosen as an end which is sufficient in itself, in the sense कि we do not pursue it to pursue something higher or some end which is higher than it, but some people pursue it as an end in itself, कि if they're going through something, या फिर if they're suffering even, या फिर if they're doing something which they don't want to do, and if they think that the end is happiness, if that thing is the means to an end and the end being happiness, they'll sustain themselves through it.
So happiness to them seems like an appropriate end which is sufficient in itself. तो इंटेलिजेंस और वर्च्यू एरिस्टोटल कहता है कि हम समझ सकते हैं कि दीज थिंग्स could have been our supreme notions of good, लेकिन they are only good if they make us happy. क्योंकि you could not desire intelligence if it does not make you happy. You could not desire virtue if it does not make you happy. मुझे छींक आ रही थी लेकिन नहीं आई, बट खैर तो या दैट्स व्हाट ही सेज कि हैप्पीनेस सिर्फ है वो चीज़ एक which you desire, and it is your supreme good, and it is something which is an end in itself. और हम बेसिकली एरिस्टोटल कहता है कि यार देखो, एक एक मैथमेटिशियन है ना, उसकी डिस्टिंक्टिव एक्टिविटी है कि वो एक एक मैथमेटिशियन है। गिटारिस्ट की डिस्टिंक्टिव एक्टिविटी है कि वो गिटार बजाता है। और एक एक गुड इंसान या एक गुड फॉलोअर ऑफ अ प्रोफेशन वो होता है जो अपना प्रोफेशन या अपना काम सही से करता है। गुड गुड गिटारिस्ट इज अ पर्सन हु प्लेज द गिटार वेल। अ गुड मैथमेटिशियन इज a person who knows his maths and all of that. So what is the distinctive quality of human beings? एरिस्टोटल कहता है कि जो हमारी डिस्टिंक्टिव क्वालिटी है ना, वो है रैशनैलिटी। वो अशरफुल मखलूक़ात वाला सारा कॉन्सेप्ट कि we are rational beings and that distinguishes us from all the other creatures, and we have to like align that with our notions of the supreme good in the way कि जो supreme good है ना, it is an activity of our rational soul in accordance with virtue, कि we know with our rational mindset what virtue is, and we practically apply that towards our ends, so that हमारा जो supreme good है, it is active in, it is an activity या फिर it is done using our rational minds in accordance with our perceptions, our right perceptions of virtue, which in turn are developed by our rational minds. We have to approach it rationally, because what might be good for us, what might be our supreme goal, it might not be aligned with the common good. So rationality, he says, is the distinctive quality. अब ये जो किताब है, इसमें आप कह सकते हो it has 10 different books, लेकिन he talks about many different things in these 10 different books and individually in these books as well. It's not like he goes at length for pages and pages on one specific topic, but he jumps from different topics, and somehow the book, with its individual bits and pieces, it contributes to a whole, which a concise whole, which talks about this very question: what is the good and how to live our lives happily. The question इसके related he writes about many different things, और हम इसीलिए in this video we are talking about the things as he presents in the book one. जिन चीज़ों के बारे में बात करता है, we're basically providing a summary of all those things, but it's obviously better to read the book itself. अब वो कहता है कि अगर तुम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, तो some people या फिर most people, एरिस्टोटल कहता है कि they see it as a whole, they consider people's life as a whole, कि अच्छा किसी को याद करते हुए they say कि अच्छा यार ये इंसान था, he lived a very happy life. लेकिन if that is the case, if people's lives as a whole are taken in order to determine whether they lived a happy life or not, so we can only be dead after happy. We can only be happy after we're dead, which is a paradox which Aristotle wants to solve. So it's like that's a paradox. Because if we take people's lives as a whole, so they can only be happy once they die. तो एरिस्टोटल यहाँ पे ये कहता है कि जो एक अच्छा इंसान है ना, एक एक जो गुड पर्सन है, हु हैज मास्टर्ड वर्च्यू यूजिंग इट्स रैशनैलिटी, जो कि वो कहता है डिस्टिंक्टिव क्वालिटी है ह्यूमंस की, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा इफ इट प्रोड्यूसेस हैप्पीनेस। अगर एक इंसान है जो सच बोलता है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि वो जो अगर वो सच बोलेगा उसके लिए सर्कमस्टेंस बेहतर होगा। Usually telling the truth gets you in trouble, but the
but this virtuous person, this good person, will not care about the repercussions, क्योंकि they're taking their virtue as an end in itself. रिपब्लिक में भी यही बात हुई थी about justice and about truth, कि justice, yeah, uh, we talked about कि how a just man who was perceived to be unjust was better and lived a better life and a more fulfilling life than an unjust person who was deemed by the people to be just. तो उसी तरह अरिस्टोटल का भी सेम तकरीबन नोशन about our supreme good, कि if we conduct ourselves in a way कि we are virtuous, we should not care whether or not it produces happiness, but even in misfortune we should conduct ourselves with the same virtue with which we conduct ourselves in happy times. Ab, lastly, the last thing in this book is what I would like to ये distinguish. क्या हो गया मेरी जुबान को, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग माय वर्ड्स. वो कहता है कि सोल के दो पार्ट्स हैं, एक है इरेशनल और दूसरा रैशनल पार्ट. इरेशनल पार्ट के दो पार्ट्स हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं आप कह लो. जिस तरह हमने ट्राइपार्टाइट थ्योरी ऑफ द सोल पढ़ा था, प्लेटो की जो जो थ्योरी थी, एंड इस शैरियट वाली एनालॉजी भी, उसके अपोजिंग व्यू है एरिस्टोटल का. इट्स दीज टू थ्योरीज डू नॉट गो हैंड इन हैंड, इट्स देयर क्वाइट अपोजिंग. हमने प्लेटो की जो कॉन्सेप्शंस थे अबाउट पार्ट्स ऑफ द सोल, वी मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, especially we discussed that in Phaedo as well. Aristotle on the other hand, he talks के he says कि हमारी सोल के जो है दो पार्ट्स होते हैं, रैशनल और इरेशनल. इरेशनल के भी दो एस्पेक्ट्स होते हैं. One is the vegetative, which deals with nutrition या फिर growth. The second aspect of the rational soul is the appetitive part. Appetitive जो हमारे impulses को गवर्न करता है, या फिर हमारे whims एंड हमारे desires और हमारे wishes को गवर्न करता है. और ये rational part का aspect इसलिए है क्योंकि it only deals with our own individual good. कि if my soul has two parts according to Aristotle at least, irrational and rational. मेरा जो irrational part है, it has its vegetative part and its appetitive part. तो मेरा imperative part यही चाहेगा कि यार मेरा अच्छा दिल कर रहा है अभी कि मैं यार ये काम करूं, इवन दो इससे किसी और का नुकसान हो रहा है. तो माई रैशनल appetitive part will not care about it because it only concerns itself with the individual good, my individual good, not with the common good. लेकिन opposed to that there's the rational part. ये rational part जो है ये कंट्रोल करता है. अच्छा, मुझे थीसिस की ईमेल आ गई है अपने, सॉरी आई वाज डिस्ट्रैक्टेड. अच्छा, तो ये जो रैशनल पार्ट है ये कंट्रोल करता है हमारे इरेशनल पार्ट को और इसके दोनों एस्पेक्ट्स को, मेडिटेटिव को और एपेरेटिव को. आप इसको कंपेयर कर सकते हो टू सम एक्सटेंट एलिगरी ऑफ द शेरियट जो थी, कि हमारी जो रैशनल पार्ट अकॉर्डिंग टू प्लेटो, इट गवर्न्स our appetitive part of the soul and the other part of the soul. We talked about this, ये प्लेटो की शेरिट एनालॉजी थी. खैर, यहाँ पे एरिस्टोटल थोड़ी सी बात करता है अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू परस्यू रैशनैलिटी एंड हाउ it is important to know these abstract things that we're talking about. Virtue और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, truth, justice, all of these things, we ought to know these things. And not only that, but हमें इसको practice भी करना चाहिए, क्योंकि if we do not practice these things in our daily lives, so we will not be able to acquire these qualities. And we can only do that with a rational mindset. ये basically, that's essentially what he talks about in book 1. So Naman, would you like to add on to anything? ये सब तो लास्ट में जो पॉइंट नंबर 7 था बेसिकली, वो बस थोड़ा सा मैं भी इसको थोड़ा सा गो थ्रू रहता हूँ, कि बिकॉज अब एक बंदे मुश्किल होता है एक बुक बंदा पढ़े फिर उसके बाद एक पॉडकास्ट ही बनाए. फिर प्रॉब्लम ये होता है कि उस बुक जो हमने बुक पढ़ी होती है उससे लेके पॉडकास्ट के बीच में जब थोड़ा सा फासला आता है तो बंदा काफ़ी चीज़ें भूल जाता है.
है कि नहीं? हम्म। फिर जब सही बंदा है। नोट्स बनाए हुए होते हैं, जब बंदा वो नोट्स पढ़ता है, बंदे को फिर याद आता है यार कि यस दिस कुड बी समथिंग वर्थ डिस्कसिंग। हम्म। सो यस, पॉइंट नंबर 7 में एरिस्टोटल डिस्कस करता है कि व्हाट इज व्हाट इज द गुड फॉर मैन। Good good should be ultimate, and it should be the ultimate object of a human life, and it should be self-sustaining in itself as well. So then he connotates good to the happiness, and he says कि happiness जो है वो उसकी description को, good की description को बेहतरीन किस्म से फिट करती है. Then he goes deep into it. He says कि जो happiness है, happiness is self sustaining in itself. बिकॉज जो अगर एक बंदे की लाइफ का जो मेन रीजन है, if it is happiness, then in his sole purpose would only be happiness. मगर it is different fit with different attributes. मतलब कि जो honor है, honor, pleasure, intelligence and all other good qualities, ये जो good qualities हैं, these cannot be the good ultimate good, because ये qualities अपने आप में self sustaining नहीं है. कोई भी बंदा इन क्वालिटीज को के साथ पैदा होता है या फिर इनको अडॉप्ट करता है, ही अडॉप्ट्स देम because he thinks that he it would these qualities would help them achieve the ultimate happiness or ultimate good, which is happiness in return. So over here Aristotle ये कह रहा है कि जो happiness है, happiness is the ultimate good in its form, because happiness is self sustaining. क्योंकि एक happiness की जो life है, as happiness is self sustaining, हैप्पीनेस जो है वो आपको एक लोनली लाइफ से भी मिल सकती है. लोनली लाइफ ये नहीं कि बंदा बिल्कुल ही अकेला होकर बैठ जाए. लोनली लाइफ कुड बी दैट ही इज ओनली थिंकिंग अबाउट हिम एंड हिज फैमिली, और ही इज हैप्पी विद इन हिज ओन सर्कल. But when we add attributes like honor, pleasure, intelligence, then ये जो है, then it doesn't become self-sustaining. It goes beyond that. तो ये जो आपकी जो happiness है, it doesn't lies in that lonely part only. Then it goes towards that different parts such as community. We start thinking of a whole community as as as, as a whole. इसीलिए आप कहते हैं कि जब आप, because when you have common sense, when you have honor, when you have these kind of properties, and then you try to pursue happiness, it is difficult for you to pursue happiness, because वो आपकी जो happiness है, वो आपको सिर्फ एक अपनी happiness से आपको वो happiness नहीं achieve होगी, because you would think of that as selfishness. You would think of the greater good. और ये हमें प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों में समझ आती है, बिकॉज when they have when they try to pursue happiness with the qualities of honor, with the qualities of pleasure, intelligence in them, it's very hard for them to pursue the happiness in their life, because उनके अंदर से वो एक सेल्फ सस्टेनिंग वाला एलिमेंट जो है, वो हैप्पीनेस का, वो जो सेल्फिशनेस वाला एलिमेंट है, वो ख़त्म हो जाता है. And they start thinking beyond themselves, and it goes towards the whole community. What do you think, Abdullah, over here? या आई अब काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बताए नुमान तुमने. इट्स लाइक आई बिलीव कि यार यू नीड सम a stronger anchor than happiness. For example, if you worked your entire life to whatever ends and your end itself was happiness, you'll seek if life is actually unfair, right? You might be striving for happiness, but misfortune strikes and it does not go as the way you planned. But if you अगर आप अटैच करोगे ना अपनी अपनी हैप्पीनेस की हम कह लेते हैं, इवन दो जो वर्ड एरिस्टोटल ने इस्तेमाल की वो यूडेमोनिया है, और यूडेमोनिया का मतलब है द स्टेट ऑफ लिविंग वेल. अब लिविंग वेल से आप कह सकते हो सुकून, कंटेंटमेंट, या फिर बीइंग ग्रेटफुल, या फिर बीइंग हैप्पी. इसके बाकी बहुत डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन क्योंकि स्कॉलर्स जो हैं दे से ही कॉल्ड इट हैप्पीनेस, तो विल से हैप्पीनेस. तो अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका गोल हैप्पीनेस है, तो life is unfair, man. It does not treat you fairly. So if you've attached your goal to the outcomes and not the act itself, तो you'll always be disappointed. For example, एक इंसान है, मैं कहता है कि यार मैं डिग्री हासिल करूंगा
And by the way, हमारी summary खत्म होगी of the book. We're just carrying out our discussion and our own opinions. जिस तरह हम usually हर वीडियो के एंड पे करते हैं, कोशिश कि हम लोग अपने opinions बताएं about whatever we read. So it's like if you attach your happiness per se to the outcome of an action. एक इंसान वो कहता है कि यार मैं मास्टर्स करूँगा, PhD करूँगा, मैं ये जॉब हासिल करूँगा, and all of that, and I'll be happy because I finally attained what I wanted. I wanted to get a very good job, for example. And if it does not happen that way, so he's not happy anymore. He's unhappy. He's depressed even, because obviously it did not go as he planned. But why? Because he attached his happiness per se to the outcome, to pursuing his degree and to having a good job. But but instead, अगर तो वो अपनी happiness जोड़ता उसी एक्शन इटसेल्फ से, या फिर अपने प्रेजेंट से, नॉट विद द पास्ट, नॉट विद द फ्यूचर और द अटेनमेंट ऑफ द फ्यूचर, तो he would live well in the Aristotelian sense. He would live well in the Eudemonian sense. Eudaimonia, I believe that it's something greater than happiness. I think so कि Aristotle बात कर रहा था about contentment, which I बिल्कुल। would like to assume. It's वी आर something much more convincing. बिल्कुल। बिल्कुल अब्दुल्ला, ये तो हमारे आजकल हम आज की सिचुएशन को, जो हमारी यूथ की सिचुएशन को भी कवर करती है, क्योंकि बिकॉज वी हैव टाइड आवर हैप्पीनेस टू सर्टन थिंग्स एंड सर्टन आउटकम्स, एंड व्हेन वी डोंट गेट दोज आउटकम्स वी बिकम डिसअपॉइंटेड, एंड देन वी लूज ऑल द होप, एंड देन वी गो इनटू डिप्रेशन, एंड इट्स ऑल गोइंग डाउन देन फ्रॉम देयर। तो ये अब्दुल्ला, जैसे कि हम देखते थे पुराने ज़मानों में, हैप्पीनेस वाज वेरी सिंपल। हैप्पीनेस वाज जस्ट मीटिंग योर ओन बेसिक नीड्स, or happiness was not really attached to anything else. It was only attached to your general needs, that's it. But now with the growing age, आप ये देख लो कि आपकी जो happiness है, it is attached with pleasure, it is attached with wisdom as well. Pleasure में ये है कि अगर if you want to have a big car in this lifetime, you want to have a sports car, you will work you will work your ass off, you will work as an employee, आप काम करोगे अपनी कंपनी में, मगर you are still not really sure if you will be able to make enough money or not. And eventually when you turn 50s or 60s and you see that no, I was not able to make enough money, or you even had certain plans that I'm gonna make a business, आपने देखा कि आपको बिजनेस के लिए पैसे इकट्ठे ना कर सके, वहां से आपकी जो हैप्पीनेस है, you fail to achieve that ultimate happiness. जब आपको वो हैप्पीनेस नहीं मिलती because you tied your happiness with pleasure, or so the problem is that you then go into depression, then वो आपको things starts going down for you from there, because we have attached our happiness with pleasure, with wisdom, with other qualities. But happiness in itself is sustaining, it's self sustaining. उसकी मैं मिसाल आप देख लो, सिंपल या फिर रूरल लाइफ से मिल सकती है, जैसे कि लोग देहातों में रहते हैं, दे जस्ट मीट देयर बेसिक नीड्स, खाना पीना कर लिया, कपड़े जो अल्लाह ने दिया पहन लिया, and they're still very happy. But and you would see that they are more happy than a person who is sitting in a chair in a office by himself, and that person would seem ये थोड़ी सी फिल्मी बातें, मगर yes, these ये बातें थोड़ी सी सच्चाई भी हैं कि we have made our perception of happiness so complex, and it is attached to so many things that most of us are not happy at the end of the day. क्या ख्याल है अब्दुल्ला? यार, I agree with what you say. But when I read this book, this idea struck me कि जो supreme good का जो connection है ना with happiness, जो Aristotle draw करता है कि the supreme good of a human life, that is eudaimonia. eudaimonia obviously मुझे जो translation जो मिली है through scholars and through translators, वो तो happiness की मिली है ना, या फिर the act of the state of living well. So if the state of living well, or if happiness is the supreme good, I don't buy that actually. क्योंकि जो ये obviously मैं क्या ही जानता हूँ, मैं 22 साल का लौंडा हूँ, Aristotle was way wiser than I am. But it's like this connection of the supreme good with happiness, I think so it has a western connotation to it. क्योंकि अगर आप ईस्टर्न फिलोसफी की तरफ जाते हो, स्पेशली स्पिरिचुअल डॉक्ट्रिन्स की तरफ जाते हो, तो दे टॉक अबाउट
becoming one with the whole, becoming an individual, then becoming a part of the whole or a part of God, becoming a servant of God. And through that journey, happiness won't sustain you. You will need a meaning, and the meaning is serving itself. द मीनिंग इज सर्विंग और मीनिंग, अगर आप चलो स्पिरिचुअल डॉक्ट्रिन्स की तो मैंने एक्सट्रीम मिसाल आपको दे दी, आप मिसाल ले लो दैट कुछ इज ऐसे वही लोगों की, ना, इसी फॉर में दैट एग्जांपल इज वाई। कार्किगार्ड एक फिलोसोफर है, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, लेकिन दैट्स कुछ फाइन। लोग होते हैं, देर लाइक, आई रेड हिज बुक फियर एंड ट्रेमलिंग, उसके बाद आई रेड अ बुक कॉल्ड फिलोसोफर ऑफ द हार्ट, बिट बायोग्राफी अबाउट कार्किगार्ड। ही नेवर मैरिड, ही डाइड इन हिज 40s, और उसने उसने शादी इसलिए नहीं की बिकॉज ही थॉट कि उसकी जो बीवी बच्चे होंगे तो उनकी तरफ ही हैड एन एथिकल ड्यूटी कि उन्होंने उनको टाइम देना है। लेकिन उसने कहा मेरी जो फिलोसॉफिकल जर्नी है, मेरी जो राइटिंग्स है, मेरा जो गोल है वो खुश ही नहीं है, वो बीवी बच्चे करना नहीं है, मेरा गोल है ह्यूमैनिटी के लिए गुड करना, लोगों के लिए कुछ ग्रेटर गुड करना। तो some people do that, some people sacrifice their happiness। तो इन केसेस में हाउ डू यू बिलीव एरिस्टोटल्स कंसेप्शन कि सुप्रीम गोल हैप्पीनेस है? उन लोगों के लिए तो नहीं था जो लोग ग्रेट अचीव करना चाहते हैं गुड, they don't अब्दुल्ला, care about happiness। अब वही we go straight to the point one. Happiness is different for everyone. Or जैसे कि we were discussing this point, I already told कि I didn't told Aristotle told कि happiness is self You sufficient in told that itself. Aristotle told। Yes, I told that Aristotle told, I quoted Aristotle कि happiness is self sufficient in itself. तो जब हम इसमें प्लेजर वाला एलिमेंट ऐड कर देंगे, प्लेजर वाले एलिमेंट में it will be mostly towards materialistic things. When you add a wisdom, when you attach your happiness with wisdom, then that happiness, आप वो happiness का term change हो जाता है, then that happiness is not self sustained to yourself, but it converts into a more broader term. Then the happiness of the humanity or your whole community is your happiness. जब आपके अंदर एक अक्ल और एक ट्रांसेंडेंस आप अचीव कर लेते हो, देन आई थिंक सो वो जो हैप्पीनेस है, यू वुड अचीव दैट हैप्पीनेस व्हेन यू थिंक यू हैव डन समथिंग फॉर द बेटर गुड। जैसे कि the example you give there about that guy philosopher who didn't marry because he was thinking that I need to do something for the humanity, like I need to finish my philosophical pursuit. Maybe because he had that kind of intellect and uh, that kind of wisdom, that his happiness was not self-sustaining now. His perception of happiness changed, and his happiness was not self-sufficient, not selfish. It was the happiness of whole community or whole humankind. So that is why he wanted to do something for the all human beings. What do you think, Abdullah? ये भी तो हो सकता है। या देयर गोल, शायद तो देयर गोल माइट हैव नॉट बीन देयर ओन हैप्पीनेस बट द हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल, या फिर दे फाउंड हैप्पीनेस इन नॉट फाइंडिंग हैप्पीनेस, इन द सेंस के दे सैक्रिफाइस देयर हैप्पीनेस फॉर समथिंग मच ग्रेटर देन दैट। जिस तरह पैगंबर थे, उन्होंने इतनी मुश्किल जिंदगियां गुजारी, इतनी परसिक्यूशन फेस की, बट दे वरंट हैप्पी in the material sense, but they were happy in the spiritual sense ke they were chosen to be servants of God, and that they were a part of something greater than themselves। So yeah, I think you answered my question, क्योंकि Aristotle himself stated in the point one I forgot कि yeah, happiness is subjective and वाटर कूलर मेरा हुआ है। Hmm. हाँ, वाटर कूलर तुम्हारा हुआ। तो या हैप्पीनेस इज सब्जेक्टिव। You could tie that to supreme goal वाला concept है, contentment even, like I said कि there's this positive, there's the negative, the positive being the happiness, the negative being pain। happiness especially sensual pleasures, and the neutral state is contentment। हमने एक वीडियो बनाई हुई है अबाउट इज हैप्पीनेस मनी बाय हैप्पीनेस वाली, आई थिंक सो हमने वीडियो की हुई है इस We तरह, had a या शायद casual रील थी एक। discussion. We had a हाँ। casual discussion when I was in Pakistan. Or yes, but yes, वो बड़ी बड़ी discussion नहीं दूल्हा, but I wanted for us to have a discussion face to face. But हम्म hopefully we would do that next time I visit Pakistan. तो हम एक हम्म। podcast एक साथ एक रूम में बैठ के करेंगे, यूँ नहीं कि भाई because yes, मगर मसला है था हम टाइम बिजी नहीं था इतने थे हमारे यार, पास, हम वैसे याशी बिजी में थे, सेटअप भी नहीं था। वही ना, हम लोग अपनी हैप्पीनेस को परस्यू कर रहे थे, याशी के में पड़ गए थे हम लोग सुबह दोपहर शाम, हम्म। बस आवारागर्दी में। तो हाँ, मगर होपफुली दिस टाइम वी वुड हैव इनफ थोड़े ज्यादा टाइम कि दिन के हम लिए आना है यार, ही वाज ओनली हियर फॉर अ वीक लास्ट टाइम। हम तो इन हफ्ते में लाहौर, क्या ही मगर रिकॉर्ड करते। वही ना,
all, not even week, 6 days यार, 6 5 5 6 days. हम्म वो भी इमरान खान के वो मछली की वजह से लंबा हो गया था, मगर यस वी हम्म हैड अ वेरी गुड टाइम. बट यस अब्दुल्ला, हमने तो आज बेहतर तरीके से पूरी बुक 1 डिस्कस कर ली है. मे बी इन नेक्स्ट पॉडकास्ट वी विल डिस्कस बुक 2 and 3 टुगेदर. एंड छोटी है वो इससे, बुक वन इज यस, एंड रिलेटिवली लॉन्गर. we would want to finish this whole book, this whole Nicomachean Ethics in probably 3 or 4 podcasts, and then we would go on towards history as well, because हमने last time survey किया था Instagram पे. Some people they want to listen some history as well. So हम्म as we already discussed, we have Mongolian history in our mind. और अब्दुल्ला ने भी बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च की हुई, मैंने भी थोड़ी बहुत की हुई है. Then we can also discuss our famous book of Marco Polo, The Adventures of Marco Polo. We could discuss that as well. There's a lot of BS in that book, but we would only stick to the rational parts. So yes, Abdullah, thank you very much for your time, man. We know it's very difficult for us because हम लोग बहुत busy होते हैं. You have your university, I have my jobs and internships. So, but we will still promise to make our podcast on daily, on not on daily basis, but more frequently, probably once a week. हम्म So yeah, hopefully we do achieve that. Abdullah, till then, take care. Allah Hafiz.